Hello. So I'm looking for sell opportunities in Nifty, Bank Nifty, and in Reliance. The only condition I have is Nifty should break a new high or make a new high by two close. If it breaks a new high or makes a new high uh, by two close, I will look for sell opportunities after two close. Stop loss will be day high. If it is not making a new high, then I wouldn't really want to take this trade, and I look for a sell opportunity even in Bank Nifty and Reliance if Nifty makes a new high by two close. मैं निफ्टी में सेल अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ और बैंक निफ्टी में और रिलायंस में। अगर निफ्टी 2 बजे तक एक नया हाई बनाती है तो मैं स्टॉप लॉस रखूँगा टू डे हाई, और दो क्लोज़ के बाद टू o'clock के क्लोज़ के बाद उसको बेच दूँगा। सेम मैं बैंक निफ्टी में करने वाला हूँ, सेम मैं रिलायंस में करने वाला हूँ।